Bismillahirrahmanirrahim. In this lesson, we will talk about land disposal systems to treat wastewater. Obviously, these are type of secondary treatment in which microorganisms and life is used to treat the wastewater. Now, application of land for the treatment of wastewater can be considered as the final disposal form of the wastewater. Why so? Because once we introduce wastewater to land, it will eventually reach the water bodies. So the land is managed so that as the water passes through the land, it is treated and the BOD content is decreased, the organic content is removed by different strategies, so that as the water seeps through the soil and reaches the water bodies, it has been treated and it is almost good enough to be released back in the environment. Now, land application of wastewater leads to groundwater recharge, as we just said, and or to evapotranspiration. Now, evapotranspiration. What is evapotranspiration? Basically, it is combination of evaporation as well as transpiration. Once we introduce water to the land, तो लैंड से वो evaporate भी करेगा और कुछ पानी जो है वो प्लांट्स absorb करेंगे थ्रू देयर रूट्स. तो प्लांट में जाके कुछ वाटर यूटिलाइज होगा और बाकी जो है वो transpiration हो जाएगी through the leaves. So evapotranspiration is a combination of both of these processes. Sewage supplies the plants with water and nutrients. So land के वो जो plants होंगे जब हम waste water introduce करेंगे तो वो plant को ना सिर्फ water provide करेंगे लेकिन बहुत से nutrients dissolve हैं waste water में वो भी plants को available होंगे and they can grow by utilizing those nutrients. Once in the soil, the pollutant has basically 4 possible destinations. कौन सी हैं? First, retention in the soil matrix. Soil is a very complex and rich matrix और इसकी बहुत सारी details हैं, बहुत सारी इसकी properties हैं physical, chemical. So इस matrix के अंदर जो solids हैं, जो particulate organic content है, उसके अलावा जो different molecules हैं present in the wastewater, those can be retented in this soil matrix. Retention by the plants भी absorb कर सकते हैं बहुत सारे organic content को और other chemical compounds को which are present in the wastewater. Appearance in the underground water. Obviously जो waste water है उसमें जितनी भी चीज़ें हैं अगर वो soil से absorb ना करें, plant उनको use ना करें तो eventually those things will reach the underground water bodies. We will not like कि waste water जो है वो untreated पहुँचे underground water bodies में. Collection by under drains. We can design a land so that once the water has seeped through the land, it is collected in the under drains and we can then use it for further purposes. Now, what type of mechanisms operate in the soil for the removal of pollutants? There are physical methods जो कि हम पहले discuss कर चुके हैं, for example settling, filtration and so many others. There are chemical methods as well which operate in the soil for the removal of pollutants, for example oxidation, chemical reactions, precipitation, ion exchange and so many other things. And obviously there are biological processes as well which operate in the soil for the removal of pollutants, for example especially biodegradation and predation. All these processes operate in the soil that contribute towards the removal of the pollutants present in the wastewater. Now every different type of soil has different capacity to deal different types of wastewaters. So we have to first find out what kind of wastewater we want to treat by using land, and accordingly we need to manage the land so that we can achieve much high efficiency of the wastewater treatment. So you can see here the capacity of the soil to absorb complex organic compounds depends on its properties and on climate conditions as well. Climate conditions भी matter करती हैं. For example टेम्परेचर क्या है उस जगह का, प्रेसिपिटेशन मींस रेनिंग वगैरह कितनी है वहाँ पे, एरेशन कितनी है, विंड कितनी है, सारी बातें कंट्रीब्यूट करती हैं इसमें. इन्फिल्ट्रेशन रेट्स एंड टाइप्स ऑफ वेजिटेशन आर आल्सो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स इन द यूज ऑफ सॉइल एज अ मीडियम फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. इन्फिल्ट्रेशन रेट का मतलब है कि जो हम अप्लाई कर रहे हैं वेस्ट वाटर लैंड के ऊपर वो किस तरह से और कितनी जल्दी और किस हद तक इन्फिल्ट्रेट करता है सॉइल में, उतना ज़्यादा उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी टू ट्रीट द वेस्ट वाटर. एंड द टाइप ऑफ वेजिटेशन, उसमें वहाँ पे किस किस्म के पौधे किस किस्म के प्लांट्स वहाँ ग्रो कर रहे हैं उसके मुताबिक वो प्लांट्स विल आल्सो कम
to interact with the waste present in the wastewater, and they can also lead to the treatment of the wastewater. So ये सारी बातें contribute करती हैं in the treatment of the wastewater by using land disposal systems. These reactions require good soil aeration. Obviously aeration अच्छी होनी चाहिए soil की, which is inversely related to the humidity of the soil. Again हमने पहले बात की climate conditions क्या हैं. अगर raining बहुत ज़्यादा है तो soil जो है उसमें soil will be saturated with water, humidity बहुत ज़्यादा होगी तो aeration कम से कम हो जाएगी. So we have to consider all these parameters. Insufficient aeration leads to lower assimilation capacity of the organic compounds by soil. अगर aeration कम है तो soil ज़्यादा चीज़ें जो है वो absorb नहीं कर पाएगा, so efficiency can be reduced. The removal results from the filtering action of the soil, followed by biological oxidation of organic material. First of all, when wastewater is introduced to the soil, वो वहाँ से percolate करेगा soil particles से होता हुआ, तो एक तरह से filter होता जाएगा. वो बहुत सारे organic content और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि dissolved हैं या particulate form में है, suspension की form में है in the wastewater, वो will be retained in the soil matrix. So एक तरह से filtering action है. उसके बाद जो वेस्ट वाटर बाकी रहेगा उसमें जो चीज़ें बाकी रहेंगी that can be utilized and those can be taken care of by the plants and by the vegetation. So twofold action is going on. Soils with clay, fine texture or with some organic matter will also retain wastewater constituents through mechanisms of absorption, precipitation and ion exchange. जो soil है जिसमें clay ज़्यादा है या जिसमें organic content ज़्यादा है, उसमें chances है कि वो बहुत सारी चीज़ों को absorb कर सके और precipitate भी कर सके. So you can see here, depending on the type of wastewater, we choose the soil. Most common types of land applications are जिसमें soil based भी हैं और aquatic based भी हैं. Soil based में आएंगी slow rate systems, rapid infiltration systems, subsurface infiltration systems and over land flow systems. And in case of aquatic based systems, we have constructed wetlands. We are talking about aquatic based systems under the heading of land disposal systems. Why so? कि basically नाम तो इनका aquatic है लेकिन basically these are operated on lands. These are constructed wetlands, kind of marshy areas, about which we will talk in our upcoming lessons. Now the selection of the treatment method depends on the required efficiency, climatic condition, depth to the groundwater, soil permeability, slope of the soil and so many other things. हमने पहले भी ये बात की कि there are so many options and we can pick and choose the combination of the soil and the wastewater. कि किस किस्म का वेस्ट वाटर है उसके मुताबिक हम सोयल की डिसाइड करेंगे और टेरेन किस किस्म का होना चाहिए, स्लोप होनी चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए, वेजिटेशन किस किस्म की होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, सो मैनी अदर थिंग्स वो सारी डिसाइड की जाती हैं डिपेंडिंग ऑन द वेस्ट वाटर एंड व्हाट वी आर लुकिंग फॉर. हमारा एम क्या है, कितनी एफिशिएंसी हमने अचीव करना चाह रहे हैं. द एप्लीकेशन ऑफ वेस्ट वाटर कैन बी डन बाय मेथड्स सच एज स्प्रिंकलर्स, फरोज, ग्रेडेड बॉर्डर, ड्रिप इरिगेशन एंड अदर्स. जब भी हम वेस्ट वाटर को इंट्रोड्यूस करते हैं लैंड पे इन लैंड डिस्पोजल सिस्टम्स, वी जस्ट नॉट थ्रो द वेस्ट वाटर ओवर देयर. उसको इंट्रोड्यूस करने के बहुत से तरीके होते हैं. ऑब्वियसली एक डायरेक्ट मैकेनिज्म भी है कि डायरेक्टली उसको इंट्रोड्यूस कर दी जाए लैंड के ऊपर, लेकिन दिस इज़ नॉट ऑलवेज आइडियल. डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज इन लैंड डिस्पोजल सिस्टम्स, वी अप्लाई द वेस्ट वाटर टू द लैंड accordingly. For example, you can see here there are so many methods which can be used to introduce wastewater to the land. This was overview of the land disposal systems. In our next lessons, we will talk about different land disposal systems one by one.